गुड मॉर्निंग। सुन पा रहे हो मुझे? Am I audible? Amritesh? Okay. Okay, Amritesh. So in the last class we have gone through the trunking and gate of service and co-channel interference and system capacity. So yes, we will revise. We will see the things. Okay. So firstly, let me share the whiteboard. Sorry, not whiteboard, the PPT. Okay. So we have gone through these things, the channel assignment strategy. Just wait for a minute. Yes, so we have gone through the channel assignment strategy, the fixed channel assignment strategy, and the borrowing strategy. We have already gone through these things. Okay, so yes, limitation of dynamic. Okay, handoff strategy. Okay, so first generation, second generation, prioritizing handoff, interference and system capacity, co-channel interference. Okay, so we have gone through all these things, trunking and the grade of service. Okay, so today we will go through some of the techniques through which we can improve the coverage. Okay, so is the PPT visible clearly? So as we have already seen that in mobile communication, we are using frequent. We are yes. So yes, we have used the co-channel. Yes, the frequency reuse concept where the same channel or the same range of frequencies is used for different cells. Okay. So yes, now we have to improve the coverage. So as we already know that there are cases where, or there are the coverage, there are the areas where there is less population or the dense population, that is based upon the number of users, how we can improve the coverage. Okay. So yes, as we can see that as demand increases in wireless communication, the allocated channel will not be sufficient for required number of users, है ना? So as the number of channels is constant, number of channels which is given to a given cluster is constant. Already हमने देखा है अभी तक कि cluster जो है, cluster is the combination of the cell and one cluster is dedicated with some definite amount of channels. Okay, and the same channel is allocated for the frequency reuse. Okay, so it is required to increase the number of channels per unit coverage area based upon the demand. So the techniques, what are the techniques which are used for improving the coverage are cell splitting, sectoring, and microcell zone concept. Okay, so as the name suggests, in all of these things, cell splitting में क्या होगा, that cell is there and that cell is splitted into small micro cells. Okay, so जो cells के अंदर जो cells बनेंगे, that are known as micro cells or the subdivided cells. Okay,
So let us see that what cell splitting is. Yes. So it already allows orderly growth of cellular system. Okay. So why we are saying that orderly growth? As the demand increases, in that case, one can increase the number of cells or subcells. Okay. The process of, yes, the process of subdividing a congested cell into smaller cells. Okay. A congested cell into a smaller cell, each with its own base station. Okay. So यहाँ पर क्या होगा, हर एक सेल के लिए there will be a definite or a dedicated base station and a corresponding reduction in antenna height and transmitter power. Yes, obviously, because as we have yes, we have a cell. Okay. And these cells are subdivided into some smaller cells, like as we can see like this. Somewhat in this way. Okay. So what we can see here, that the cell is subdivided into some different cells, and these cells are dedicated with different BTS. Okay. But the case is that इस केस में क्या होगा, जो BTS होगा, that BTS will be of lesser height, क्योंकि अब ये एक कम रेंज को कवर करेगा. So it will definitely, it will have the smaller antenna and antenna height and the transmitter power. Transmitter power भी कम होगा. क्यों? क्योंकि इस बार ये एक स्मॉल रेंज को कवर करेगा. ओके. एक चीज और क्या है, दैट हम क्या जानते हैं कि एक क्लस्टर को एक सेट ऑफ चैनल्स दिया जाता है. सो जब हम इस सेल को सब डिवाइड कर रहे हैं तो सेम नंबर ऑफ चैनल्स विल बी कम अंडर दिस सब सेल. ओके. सो कैपेसिटी इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशनल नंबर ऑफ चैनल्स पर यूनिट एरिया. क्यों? क्योंकि इस बार जो भी चैनल दिया गया था, दैट सेम चैनल इज डिवाइडेड among these things. Okay. As let us assume that if we have we have 100 number of users and it is increased to 500 number of users. जब ये like मान लें कि किसी एक particular coverage area के लिए there is higher population, in that case when we use this cell splitting, the same channel, the same number of channels is dedicated for or used for this smaller cells also. Okay. So the अभी जो ये 100 कैपेसिटी का ये जो सेल्स था, मान लीजिए 100 कैपेसिटी का जो सेल्स है, अब इसे हम सब सेल में डिवाइड करके उसे 500 तक ले जा सकते हैं. ओके. सो yes, cell splitting in this way, you can see here that there is a large cell and which is of radius r. Okay. With low density. So यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक या इस एरिया में जो BTS होगा, this will be of higher of height which is higher. Okay. And smaller cells with radius r by 2. Okay. और यहाँ पर क्या होगा, हाई डेंसिटी होगा. अब इस जो r by 2 है, ये फिर से r by 2 से किया गया, then we have a smaller cell of r by 4. Okay, where there is higher density. So depending upon the traffic pattern, that is depending upon the demand, the smaller cells may be activated and or deactivated in order to effectively use cell resources. Okay. So from this picture, it is you can understood that we have a thing which is that in we have already gone through ratio, which is cell use ratio, reuse ratio. Q is equal to, yes, we have, I think all of you have seen that ratio.
that is Q is equal to D by R. Okay, so in this case, as we are decreasing the cell size, we are increasing the Q value. Okay, so this is cell splitting. Now we can go through the advantages and disadvantages of the cell splitting. So what we can see that the first advantage is the number of cells per unit area increases. क्योंकि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो बड़ा सेल है उसे हम स्मॉलर सेल्स में डिवाइड कर रहे हैं, hence we are getting a cell which is large number. Okay, so the first advantage is the number of channels per unit area increases. क्योंकि एक बड़े सेल को, जैसा कि हमने इस पिक्चर में देखा लास्टली, कि जो सेल्स यहाँ बन रहे हैं पर यूनिट एरिया, जो चैनल्स हैं वो सेम है, सो द नंबर ऑफ चैनल्स पर यूनिट एरिया इज इंक्रीजिंग. तो इस तरह से क्या होगा, कैपेसिटी विल इंक्रीज. सेकंड इज द सिस्टम कैपेसिटी इंक्रीजेस. यस, ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड यू दैट नंबर ऑफ चैनल्स बढ़ेगा, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर सेल में मोर नंबर ऑफ यूजर्स को हम कम्युनिकेट करवा सकते हैं. नेक्स्ट इज दी एंटीना हाइट रिडक्शन. यस, ऑब्वियसली सेल साइज कम होगा, एंटीना हाइट रिडक्शन होगा. इन द सेम वे वी विल हैव द लेस ट्रांसमीटर पावर आल्सो. ओके, yes, transmitter power is also reduced. Now we can see the disadvantages as the number of base station increases. हमने क्या कहा कि हर एक सब सेल के लिए, हर एक स्मॉल सेल के लिए क्या चाहिए, हमें एक अलग एंटेना, अलग BTS चाहिए. सो इस तरह से क्या होगा, नंबर ऑफ बेस स्टेशन इंक्रीज करेगा. मतलब इकोनॉमिकली ये थोड़ा वेट बढ़ेगा. नेक्स्ट इज द ओवरऑल लॉस ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस. क्योंकि इस बार जो है एक कवरेज रेंज जो कि डिफाइन किया गया हर एक पर्टिकुलर सेल के लिए, वो ओवरलैप होगा. एज वी कैन सी हियर, यस, एज वी कैन सी हियर, यहाँ पर हर एक एरिया में जो हम क्या देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे BTS होंगे, इनका जो सिग्नल्स है वो आपस में ओवरलैप करेगा एंड देयर विल बी एन इंक्रीज इन द interference also. Okay, so इस तरीके से there is cell splitting. The concept of cell splitting is there. तो जब हम रेडियस को घटाते हैं, then there will be a reduction in the power and coverage area जो है माइक्रो सेल का वो बढ़ जाता है. ठीक है ना. So this cell splitting is used with some limitation. Next is the sectoring. Just wait for a minute. Hello. हाँ, अच्छा, आप ही बार बार कॉल कर रहे हैं क्या? क्लास ले रहे हैं इसलिए फोन नहीं उठा रहे ना. तो ये तुरंत 5 मिनट की थोड़ा वेट कर सकते हैं ना. बार बार फोन अगर कट कर रहे हैं इसका मतलब है कि कुछ काम है. अच्छा, नहीं तो अभी लगातार 2-3 बार और कॉल आ रहा था, तो मैं कॉल कट कर रहा हूँ. समझना चाहिए कि बिजी है थोड़ा सा. 12-20 मिनट. ओके. Okay, sorry for interruption. So sectoring, as the name suggests, the sectoring. Okay, let me show you the picture first. Okay, yes. अभी तक जो हमने देखा, in that case omnidirectional antenna was used. मतलब है क्या कि ये जो एंटेना यहाँ पर होगा, it will cover these whole of the cell. Okay, but in case of cell sectoring, there will be different types of cell sectoring will be there. Means इसका मतलब है कि एक एंटेना सेक्टर्ड एंटेना यहाँ पर लगाया जाए जो कि सारे डायरेक्शन में
सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं करके एक पर्टिकुलर रेंज में ही सिग्नल को ट्रांसमिट करे, मतलब सिग्नल भेजे। इन दैट केस वी विल यूज सेक्टरल एंटीना। सो यहाँ पर 120 डिग्री का एक सेक्टर्ड एंटीना होगा, यहाँ पर भी 120 डिग्री का ही है। इन द केस देयर विल बी 90 डिग्री सेक्टर्ड एंटीना, 90 डिग्री सेक्टर एंड 60 डिग्री सेक्टर। तो इस तरह से केस क्या होगा कि यहाँ पर 6 एंटेनास की जरूरत होगी। ओके, आप यहाँ पर देख रहे हो कि 6 एंटेना, सेक्टर्ड एंटेना की जरूरत होगी, और यहाँ पर 3 सेक्टर्ड एंटेना की जरूरत होगी। सो इन दिस केस ऑल्सो जो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली बढ़ेगा, बट यहाँ पर होगा क्या कि देयर विल बी वेरी लेस इंटरफेरेंस। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि जो को चैनल सेल्स हैं, जैसे कि अब अभी मान लें कि ये अगर एक सेल है, इस सेल पूरे सेल का ये जो सेक्टर ए है, इस रेंज में ही सिर्फ सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा। तो इस रेंज में जो भी को चैनल सेल्स आएंगे उनके लिए ये सिग्नल यूजफुल होगा, बट अदर्स के लिए ये यूजफुल नहीं होगा। ओके, सो इन दिस केस व्हाट वी आर डूइंग, सो पहले जो हमने कॉन्सेप्ट देखा सेल स्प्लिटिंग का, उस केस में क्या हो रहा था, डी बाई आर क्या है, डी बाई आर जो वैल्यू हमने देखा इन द केस ऑफ सेल स्प्लिटिंग, द डिस्टेंस डी वाज कांस्टेंट सेल स्प्लिटिंग के केस में। इन केस ऑफ सेल स्प्लिटिंग के केस में हमने इस डिस्टेंस डी को कांस्टेंट रखा था, एंड आर वाज वेरिंग मतलब हमने रेडियस को कम किया। सो यहाँ पर डी बाई आर का रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा, एंड सेल स्प्लिटिंग आल्सो इंक्रीजेस द चैनल्स पर यूनिट एरिया एज वी हैव ऑलरेडी सीन। ओके, बट इन दिस केस अभी Q वैल्यू को हमें फिर से चेंज करना है। सो वी आर again in this case what we are doing, we are taking R as constant and we want to decrease the D by R ratio, क्योंकि हमने ये पहले देखा था कि Q का जो वैल्यू है वो थोड़ा कम कर सकते हैं या कम हो सकता है। सो सेक्टरिंग जब हम करते हैं, इन दैट केस SIR सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो का वैल्यू जो है, SIR का वैल्यू है, इस केस में क्या होता है, इट विल इंक्रीजेस, so the cluster size may be reduced in this case. So yes, let us go through the theoretical part again. So the co-channel interference in a cellular system may be decreased by replacing a single omnidirectional antenna at the base station by several directional antenna, each radiating within a specified sector. Okay, so in this case instead of using omnidirectional antenna, we can use, or we are using the directional antenna. Okay, so that there will be a decrease in the co-channel interference. Next, by using directional antenna, a given cell will not receive interference and transmit only a fraction at the अवेलेबल को चैनल सेल्स, क्योंकि जो डायरेक्शनल एंटीना है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रेडिएट कर रहा है। सो इसमें ही जो को चैनल सेल्स आएंगे सिर्फ वो ही ज़्यादा इस सिग्नल का यूज कर पाएंगे। ओके, सो देयर विल बी लेस को चैनल इंटरफेरेंस। एंड द नेक्स्ट वन, cells partition into we have already seen the cell is normally partitioned into 3 120 degree or 6 60 degree sectors. So generally these two partitions are used. Instead we can use a 90 degree cell partition. Okay, so in this case we can say that here we are decreasing the co-channel interference by using sectoring, and hence we are improving the system performance. Okay, so here reducing co-channel interference
interference, and we are increasing the system performance. Okay, so let us see that. Yes, cell sectoring. We have already gone through this. Just wait for a minute. Okay. So yes, so here we have seen the cell sectoring. Next. So the advantages and disadvantages of the sectoring process. What we can see, the first advantage, it reduces the co-channel interference within a system. Yes, obviously we have seen already this. The next one is increases capacity by increasing signal to interference ratio. Next one is the as we have already seen that the cell radius is gets unchanged, क्योंकि हमने पहले ही देखा क्या कि फर्स्ट इसके पहले वाले केस में in case of cell splitting the radius of the cell was changing, due to which there may be some overlapping case of things will be there. So now we can see the disadvantages. What are the disadvantages? That yes, the number of antenna again will be get increased. क्यों? क्योंकि हर एक सेक्टर में इस बार क्या करने की जरूरत है, different antennas या number of antennas are required. Okay, and yes, trunking efficiency decreases due to channel sectoring at the base station because available trunk channel is split into several smaller pools. क्योंकि जो भी ट्रंकिंग सिस्टम है जो कि हमने लास्ट डे देखा था, in that trunking system there is a pool of channels which are available over there, and among that pool of channel some of the channels is dedicated based upon or the demand. Yes, so in trunking system what we are doing, we are accommodating large number of users in a limited radio spectrum, as we have seen in the last class. So in that case, large number of users can share relatively a small number of channels by providing access to the users on demand. Yes, so in trunking we have seen that, and in this case what is going that one cell is divided into sectors, and all these sectors are will have some smaller pools are available. Smaller pools matlab smaller pools of channels will be available because the same cell is divided into different sectors. Okay, now the next one is advantages and disadvantages may. Yes, the next one is sectoring makes handoff more typical because mobiles crossing the boundary of sector to another sector within the same cell demanded handoff. Okay, so यहाँ पर क्या है, हर एक बार जब चूंकि अलग अलग एंटेनास हैं फिर से, then हर एक बार क्या होगा, handoff will be required. So इट इज अ बिग लिमिटेशन, क्योंकि हर एक बार हैंड ऑफ की जरूरत होगी और बेस स्टेशंस को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट, यस, माइक्रो सेल जोन कॉन्सेप्ट. सो इन माइक्रो सेल जोन कॉन्सेप्ट व्हाट वी हैव सीन अर्लियर दैट द इंक्रीज नंबर ऑफ हैंड ऑफ, जो कि हमने देखा सेक्टरिंग के केस में कि मोर नंबर ऑफ हैंड ऑफ्स आर रिक्वायर्ड. क्यों? क्योंकि जो सेल है वो डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइडेड है. Okay, so increased number of handoff required when sectoring is employed.
so which results in increased load on the switching and control link elements, okay, of the mobile system. So this problem is solved by micro cell zone concept. So what is the micro cell zone concept? We will see pictorially. So replacing a single omnidirectional antenna at base station by several directional antennas lead to decrease in co-channel interference. Okay, so फिर से वही चीज है. Now the technique for decreasing co-channel interference and thus increasing system performance by using directional antenna is called. Okay, so I think I have put here the wrong statement, or I have put here the statement from the sectoring. So this should be in the last PPT in for sectoring. Okay, let me stop that and make me correct. Okay, I will do it later. So yes, in microcell zone concept, you can understand this pictorially. Yes, here you can see that one cell is there, one big cell is there, and within this cell, there are smaller cells are here, or smaller regions are here, which are encircled, and all of these are connected with the either microwave or the fiber optic link. So we have microwave or fiber optic link is there, which is connected with all the transmitters. As you can see that there are TX, RX is written here. So based upon the demand, यानी कि जिस area में जो भी system होगा या जो भी mobile station होगा, that will be activated. So यहाँ पर एक zone selector है, as you can see there, see here that BTS tower is connected with a zone selector. So the user may be in one of the zones, and users may be in one of the zones, and these zones are get selected with the zone selector, and these zone selectors are these regions are connected with the microwave or the fiber optic link. Okay, so we will have this. Oh, sorry. Let me share the screen again. Okay, so we have this micro cell zone concept where the smaller zones will be there, and these zones are connected with a zone selector, so that the zones will be selected based upon the user location. Okay, so इस तरीके से यहाँ पर हैंड ऑफ की कोई जरूरत नहीं है, या यहाँ पर कोई भी जो हमने देखा इन केस ऑफ सेक्टरिंग और सेल स्प्लिटिंग में जो प्रॉब्लम्स वहां पर आ रही थी, दैट आर दोज आर गॉट एलिमिनेटेड. सो इस तरीके से वी हैव सीन माइक्रो सेल जोन कॉन्सेप्ट. ओके, सो here in this case, as we can see that if the mobile travels from one zone to another, जो कि एक ही सेल में है, it retains the same channel. Okay, there is no need to change or withdraw the channel. Okay, so जैसा कि हमने सेक्टरिंग में देखा कि there is hand off required था, यहाँ पर required नहीं होगा, और hand off जहाँ भी hand off प्रोसेस होगा, MSC हैज टू बी देयर, MSC का वहां पार्ट आएगा. एंड जब भी मोबाइल ट्रेवल करेगा वन जोन से अलग दूसरे जोन में. ओके, सो बेस स्टेशन क्या करता है इस केस में? सिंपली स्विचेस द चैनल टू अ डिफरेंट जोन साइट. ओके, सो बेस्ड अपॉन द यूजर डिमांड वी विल हैव दिस टाइप ऑफ technique which is used there. So अब इसका एडवांटेज क्या है? What is the advantage of using this
zone cell concept. So advantage is that in this case, the cell maintains a particular coverage radius. Okay, so the co-channel interference in the cellular system is reduced. Yes, so in this case, co-channel interference reduces. Okay, so since a large central base station is replaced, so a large central base station is replaced by several low powered transmitters. Okay, transmitters, or these are also known as what? These zone transmitters. Okay, the zone transmitters, which are placed at the edges. As you can see that these are placed at the edges of the cell. Okay, so in this case, the decreased co-channel interference improves the signal quality. That will also may lead to an increase in capacity without the degradation in the trunking efficiency. Okay, जो कि हमें सेक्टरिंग में मिल रहा था, in that case, जो कि यहाँ पर इस लिमिटेशन को दूर किया गया, that is trunking efficiency. ट्रैकिंग एफिशिएंसी को बिना डिमिनिश किए this system can do the job. Okay, so in this way we have covered approximately the things. So in the next class we will move further. आज के लिए इतना ही रखते हैं, but I expect from you all to read all these things through a book. So whatever book is available to you, you can go through this. So instead of these three concepts, one more thing is there. So let me go through that. Yes, one more thing is there. And that is repeaters. Okay, repeaters are also used in this type of for increasing the coverage range. Okay, so ये repeaters क्या है? So repeaters are used for the areas which are hard to reach. Okay, so just wait for a minute. Yes, so repeaters इस्तेमाल हो सकता है जो वैसे एरियाज के लिए जहाँ पर सिग्नल को रीच करना थोड़ा सिग्नल्स को रीच करने में दिक्कत होती है, जैसे सम वैलीज वाले रीजन है या टनल्स हैं, तो इन दैट केस repeaters are used. Okay, so that they can provide the communication within those areas. So in that case, repeaters which are used are bidirectional in nature. Okay, bidirectional in nature कहने का क्या मतलब है? तो bidirectional in nature कहने का मतलब है that they can simultaneously send signals and receive signals from a serving base station. Bidirectional का मतलब क्या है? Send or receive signals
at the same time. Okay. So yes, we have seen the techniques which are used for increasing coverage area and the increasing capacity. Okay. So okay. So in this way, we have seen the coverage area. In this way, the cell splitting, sectoring, and microcell zone concept. Except these three concepts, we are also using, or repeaters are also used for extension of the range. Okay. So आज के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. ओके. सो आई थिंक आप लोगों का और भी क्लासेस चल रहा होगा. इसके अलावा आई थिंक some of you have also preparing for GATE also, because so have you filled the form of GATE? I think Amritesh has filled. Yes, Amritesh has filled the form. Anybody else who has filled the form of GATE? Ankit, Afghan, Shubham, Gaurav. Have you filled the form? No reply. Okay. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. We'll meet in the next class. Thank you. Yes, क्लास से बाहर जाने में सबसे पहले, बट रिप्लाई करने में पीछे. Okay. Just wait for a minute. Yes. Amritesh, please tell those two people to please rejoin again so that I can take the screenshot for your attendance. Okay, let's do it. Okay, thank you.